I am Dr. Siddharth Kadu Ranyewale, working as an assistant professor in the Department of Geography at ACS College, Sonai. This is the first session or discussion which are going to have. So, today I am going to discuss about the principles of GIS or principles of Geographic Information System. First of all, what is GIS? So GIS stand for geographic or geospatial. So GIS has something to do with geography. So in geography, we study the different places on the surface of the earth. So it means G means geospatial or knowledge about what is where when. I stand for information. So GIS has something to do with information, namely geographic information. And S stand for system. So GIS is an integrated system of geography and information tied together. So in GIS, we are going to study geospatial or location based study of the on the surface of the earth. So before we go further, we must know something about history of GIS. As we know that this is not today GIS has been developed. It have taken many years or decades to develop. So the phrase geographic information system was coined by Roger Tomlinson in 1968 when he published the scientific paper, A Geographic Information System for Regional Planning. Roger Tomlinson is an Canadian scholar acknowledged as the father of GIS, who created with enabling the first computerized GIS to be created through his work on the Canada Geographic Information System in 1963. Ultimately, Tomlinson created a framework for a database that was capable of storing and analyzing huge amount of data, leading to the Canadian government being implemented its natural land use and management program. So before Tomlinson, first GIS was used by Jon Snow, who was one of the important or pioneer in this field. Jon Snow was a physician in London, in England. So he is an epidemiologist and physician, was able to determine the source of a cholera outbreak in London through the use of spatial analysis. This through plotting the residence of each victim on a map of the area as well as the nearby water sources. In 1854, there was a city, London, hit by a cholera epidemics. Most of the thinker at that time thinking about that the cholera spread due to infection by air, but Jon Snow discussed or who prepared a map of waterfronts and cholera disease or the victims. Actually, he prepared the first spatial map. Actually, it is paper map. So basically, when we talk about GIS is a computer-based system or computer-based techniques or tool
which is helpful to create different maps for planning and development purpose. But before development of this computer-based system, in 1854, Jon Snow created paper map, and in that map he used spatial analysis. So that was the first part of GIS. So he used spatial analysis on paper map to end the epidemic in London and England. So he created map, लेयर बनाते हैं, वो लेयर इन्होंने पेपर मैप पे तैयार किए, जिसमें इन्होंने वाटर पंप जहां जहां पे है, जहां से पीने का पानी मिलता है वो, और जहां पे कॉलरा डिजीज स्प्रेड हुआ है, सो उनका कंपैरेटिवली स्टडी किया, और देन ही फाउंड दैट most of the disease come from these where the contaminated water are there. So that is the, he found that that is the reason to spread this cholera, and he closed that those pumps which are infected or which are contaminated. So it was very helpful to control this disease. So this is first person who used GIS, but it was just paper, on paper. So this is the map of Jon Snow who created, which shows these are the some pumps, water pumps, and this is the location from that point the cholera disease were spread at that time. So he found that, देखा कि जिस पंप से कंटेमिनेटेड वाटर जा रहा है, जिसकी वजह से ये कॉलरा डिजीज तेजी से फैल रही है, सो उसने उन्होंने वहां पे कंट्रोल का सुझाव दिया, और इमीडिएटली वहां पे इस कॉलरा को ब्रेक लगा. सो ही was first used map for solving some problems by GIS. The definition of GIS, there are some definitions. First definition was there, which was explained given by Tomlinson in 1972. The common ground between information processing the many field using spatial analysis techniques. So this is his definition. We will discuss further more detail about this definition. Before that, we just read this all definition, and we found some common parts are there in those definition. So second definition is there, a powerful set of tools for collecting, storing, retrieving, transforming, and displaying spatial data from the real world. So this definition was taught by Burrow in 1986. After that, NCGIA taught in 1987 that a computerized database management system for the capture, storage, retrieval, analysis, and display of spatial. Last one is Cowen in 1988 taught that a decision support system involving the integration of spatially referenced data in a problem solving environment. So when we discuss about all these definition, we found that one word is common in all definition, that is spatial analysis techniques. In second definition, a powerful set of tools for collecting, storing, retrieving, transforming, and displaying spatial data from the real world. Third definition also shows the analysis and display of spatial data. And the fourth one is decision support system involving the integration of spatially referenced data in a problem solving. So spatially referenced data. So what is meant by spatial data? So spatial data means the data which are related to location, space, or place. So that we called spatial data. So
basically in geography we are study the different places or different places on the earth surface. They are related to location, place, or space. One more definition is there which is more appropriate for this GIS. So a system of integrated computer based tool for end to end processing of data using location on the earth surface for interrelation in support of operation management, decision making, and science. So this is one of the important definition. So it is computer based tool. So what is GIS? GIS is nothing but a tool or techniques which are able to process of data by using location on the earth surface for interrelation in support of operational management, decision making, and science. So set of integrated tools for spatial analysis. It encompasses end-to-end processing of data. So in this GIS system, we captured data, stored, retrieval, analysis, or modified data and display in the format of map. So this is the important definition. So uses explicit location on earth surface to relate data. It aimed at decision support as well as ongoing operation and scientific inquiry. So it is very helpful for decision makers or for something plan in a particular region. So basically, what is GIS? GIS is a system for capturing, storing, checking, manipulating, analyzing, displaying data which are spatially referenced to the earth. So the components of GIS. So basically GIS has main 5 components. Many books different scholar shows different components. Somebody says 6 components, 7 components, but as per requirement or as per my knowledge, there are 5 main components which are very important in GIS procedure or in GIS field. So there is no first or second rank in these components. Every component in GIS has equal importance. So let's start to discuss about components. Number 1 is hardware. So this hardware. So what is mean by hardware? Hardware is the computer on which input, procession, output, and storage of data. So what is hardware? Hardware is a system which provide to work GIS. For example, CPU, monitor, means all computer based system. CPU, monitor, scanner, mouse, keyboard, pen drive are the part of hardware. After that, second one is software. So software needed to store, analyze, and display geographic information. So software are tool or functions which are helpful to store data, to capture data, to manage data, to manipulate, or to display data in the form of maps, charts, or pie charts, or histogram, etc. So third is the procedure or methodology. Methodology is a successful GIS operates according to well-developed plan and business rules, which are models and operation work of GIS or in the business of GIS. We have to use some methods which are working in different softwares. So for example,
from where we data collected. So data collected from satellite imagery, maps, through scanner. So use scanner, digitization work is there, data attachment is there. So how to create shape files are there. So how to attach data to shape file and how to give final output are the procedure uses in this tool or in GIS. So this is third important component. After that, fourth one is people. So people or users are also important part while handling GIS platform or GIS tool. Actually, people or user means not only user or people, it means skilled people. So those who knows about these softwares, so these peoples are considered as people. So for the all work, so people are required to do work in this platform. And last one is data. So data or GIS data is in the combination of geographic or tabular data, geographic or that we say spatial data. So spatial data, so those data which are related to space, place or location, that we call geographic data. So same data is applicable here or required here to do something in GIS platform. So geographic data or spatial data or locational data, for example, cities, trees on the earth surface are the data. And tabular data, the tabular data is supportive data for spatial data. So both data are useful, means required in the GIS. Types of data that we call geographic data. Basically, data in the GIS divide into two types. Number one is spatial data and number two is non-spatial data. Non-spatial data is also called as attribute data, or it also known as tabular data or table data. So first one is spatial data, which is also divided into three categories. Number one is vector data, raster data, and tin data. So spatial data describe absolute and relative location of geographical data. So spatial data describe absolute and relative location on the earth surface. So what is absolute location and what is relative location? So absolute location, it is exact location on the earth surface, and relative location means which is given by somebody's reference. For example, जो suppose जो हम लोकेशन बताते हैं, लोकेशन जो हम निकालते हैं, जो पृथ्वी पे अर्थ पे किसी भी चीज का, किसी भी ज्योग्राफिकल फीचर्स का लोकेशन जो है वो हम दो तरीके, और रिलेटिव जो हम किसी और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में बताते हैं. फॉर एग्जांपल, सोनई कॉलेज इज लोकेटेड at near the Rahuri road. So it is located near the at the Rahuri road. So Rahuri road के आस पास लोकेशन बताया. सो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोकेशन, जिससे हमें एग्जैक्ट उसका अर्थ पे पता चलता नहीं है. So that's why absolute location is very important. Absolute location described with the help of latitude and longitude, which are imaginary line which explain or which is helpful to give actual location on the earth surface. हमने जो ग्लोब से मैप बनाया, मैप पर हम एग्जैक्ट कहाँ पे है
वो हमें दिखाने के लिए हमने जो इमेजिनरी लाइन बनाई है, जो हमने लाइन बनाई है, उसकी जो लाइन है, वो लाइन को हम लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड कहते हैं। उसके हिसाब से हम जो लोकेशन बताते हैं, जो लोकेशन एक्सप्लेन करते हैं, that is called absolute location, that is exact location. After that, non-spatial data. So non-spatial data describes characteristics of spatial features. It is often referred to as tabular data. It gives information about the spatial features. जो हमारा spatial data है, उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसकी अदर इंफॉर्मेशन जो है, जो हमें वहां पे दिखती नहीं है, वो दिखाने का काम हमें नॉन स्पेशल डेटा करता है। अभी स्पेशल डेटा जो है, एब्सोल्यूट लोकेशन जो है, एब्सोल्यूट लोकेशन हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हिसाब से बताते हैं। लैटिट्यूडनल लोकेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन। लैटिट्यूडनल जो है वो हम लैटिट्यूड के हिसाब से नॉर्थ फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्दर्न साइड और इक्वेटर टू सदर्न साइड होता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन होता है वो प्राइमरी मेरिडियंस जो हम लंदन से काउंट करते हैं, वहां से ईस्ट और वेस्ट को काउंट करते हैं। सो स्पेशल डेटा and so what are the difference between spatial and attribute data or spatial and non-spatial data? So spatial data that defines location, that we call spatial data. It includes location, size, shape and orientation. So spatial data means, for example, India or area of India is our spatial data. So it has some location, some extent, means equatorial extent is there, longitudinal extent is there, right? So location is there, so it has some size, shape और size. जो इंडिया का शेप है वो ट्रायंगुलर, लगभग ट्रायंगुलर शेप है. सो those data are the data include location, size, shapes and orientation, which is known as spatial data. It represents all types of data objects that are present in geographic space. जो अर्थ पे all features which are related to the ground or to the earth, all are comes under the spatial data. पृथ्वी पे जो जो चीजें है, जिसका अस्तित्व है, वो सब स्पेशल डेटा में आती है. जैसे ट्रीज है, ट्रीज आर देयर, रोड्स, नेटवर्क्स, trees, mountains, plateau, rivers, all these are spatial data which has geographic space. After that, what are the source of spatial data? So satellite images or scan maps are the source of spatial data, which helps to obtain spatial data. So with the help of scan map or satellite image or what we say, satellite image. So satellite image and scan maps are the important. It helpful to obtain spatial data. After that, spatial data are generally multidimensional. So it has multidimensional. So it is one dimensional, two dimensional, three dimensional. It has point, line, polygons. So these are multidimensional data. Spatial data stored in a shape file and geodatabase format. So when we work in GIS platform or GIS software, we call or we say the file is shape file. So those
features we created with the help of point, line, polygon, we called them shape file. हम जो काम इस GIS प्लेटफॉर्म पे करते हैं उसके लिए हमें पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन ये फीचर्स का उपयोग करके हमें ये फीचर्स आइडेंटिफाई करना होता है. सो ये जो फीचर्स हम बनाते हैं उनको हम शेप फाइल्स ऐसा शेप फाइल कहते हैं जिसका एक्सटेंशन s.shp ये होता है. सो इट टेल अस वेयर द फीचर इज. सो after that, attribute data or non-spatial data or tabular data, it is describe the properties and characteristics of spatial data. So attribute data tell us something about spatial data. So it describe the properties and characteristics of spatial data. It is independent of all geometric consideration. This data are referred as non-spatial data because it does not represent any spatial characteristics of the earth feature or the features. ये जो नॉन स्पेशल डेटा है ये हमें स्पेशल डेटा की जो इंफॉर्मेशन है वो डीप बताने का काम करता है. सो ये इसका कोई भी अस्तित्व अर्थ पे नहीं होता. फॉर एग्जांपल, there is a building. So building is our spatial data. So we can see building from space. We can see it on map. But about that building, what is their height, how many classes are there, or how many rooms are there, how many people living in that building. So all these matters are not seen from this space. So that's why this data is called as non-spatial data. It is supportive data for spatial data. Attribute data stored in a table format and are linked to the spatial features. So basically, when we digitize some features in GIS platform, we create a particular geometry, for example point, line and polygon. So point हम कहाँ पे बनाते हैं? फॉर एग्जांपल वर्ल्ड का मैप है जहाँ पे हमें दिल्ली दिखानी है. तो दिल्ली हम पॉइंट से शो कर सकते हैं, उसका हम एरिया शो नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज स्मॉल स्केल मैप. जो स्मॉल स्केल मैप होता है उसमें हम जो बड़ी सिटीज है पॉइंट से दिखा सकते हैं. सो पॉइंट में हम दिखाते हैं. बट समथिंग अबाउट दिल्ली, वी अटैच दैट टेबुलर फाइल टू दैट डेटा in hidden site. So we link table or information about Delhi to that shape file. So that's why attribute data is very important to stored information in very large scale. So it is linked to spatial data. We can link this data, attribute data to spatial data or spatial features, all geometric features which we create with the help of GIS tool or with the help of point, line and polygon. So attribute data is what the feature is. So spatial data shows us where the feature is, where or means the location on the earth surface, and the attribute data tell us about that location or that features. It gives more information, detailed information regarding that particular location. So vector data, as we seen in this slide, types of GIS data. Spatial data has 3 types: vector data, raster data and tin data. And in this slide we are going to discuss what is vector data.
a representation of the world using point, line, and polygons. Vector model are useful for storing data that has discrete boundaries such as country boundaries, land parcels, and street. So, with the help of vector data, we can show different boundaries, roads, networks, cities, etc. So number one is point features. Point is a map feature that has neither length or area at a given scale, such as city on a world map or building on a city map. So point features जो है वेक्टर डेटा, बेसिकली हम जो जीआईएस में वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसमें बेसिकली both data, vector data and raster data both are यूज, दोनों का उपयोग हमें होता है. हम क्या करते हैं, रास्टर का वेक्टराइजेशन करते हैं और वेक्टर का रास्टर बनाते हैं और उस पे डेटा अटैच करके एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर मोटिवेशन, वी क्रिएट डिफरेंट मैप्स, वेदर प्लानिंग मैप्स, जिस प्रकार का मैप हमें चाहिए वो हम इस पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन के फीचर से बनाते हैं. So after that, line features, a map feature that has length but not area at a given scale, such as a river on a world map or a street on a city map. So it is line, or it is also known as polyline, जिससे हम रिवर, नेटवर्क, स्ट्रीट, ये सब मैप में हम शो कर सकते हैं. सो लाइन फीचर इज देयर. आफ्टर दैट, पॉलीगॉन फीचर, a map feature that bound an area at a given scale, such as a country on a world map or a district on a city map. So area which is bounded by a particular shape, that is called polygon. पॉलीगॉन की मदद से हम सिटीज, एरिया, डिफरेंट एरिया हम मैप में दिखा सकते हैं. जैसे सिटी हो गया, या फिर फॉरेस्ट एरिया है, या फिर वाटरशेड है, वाटरशेड एरिया है. डिफरेंट एरिया हम पॉलीगॉन की मदद से शो कर सकते हैं. आफ्टर दैट, रास्टर डेटा. So this raster and vector data will be discussed more appropriately in next slides. So raster data is a representation of the world as a surface divided into a regular grid or cell. So raster data is in the form of grid or cell. Raster models are useful for storing data that varies continuously, as in an aerial photograph, a satellite image, a surface of chemical concentration, or an elevation surface. रास्टर, बेसिक जो डिफरेंस रास्टर और वेक्टर मॉडल का है. सो हम जो मैप की आउटलाइन बनाते हैं, वो आउटलाइन इज द एग्जांपल ऑफ वेक्टर डेटा. और जो एग्जैक्ट मैप होता है, फॉर एग्जांपल आवर फोटो और स्कैन मैप आर द एग्जांपल ऑफ रास्टर डेटा. जिसकी ग्रिड होती है, सेल होती है, वो जो डेटा होता है उसे हम कहते हैं रास्टर डेटा. विथ अ जीआईएस एप्लीकेशन, you can open digital map on your computer, create new spatial information to add a map, create printed maps customized to your needs, and perform spatial analysis. Smaller cells improves image quality because they increases details finer, and they increases detail finer, and finer grids leads to better resolution. We all know that we have mobile cameras. We take photos from the cameras. So different camera has different resolution, that we say megapixel.
हम बोलते हैं कि मेरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, इसका कैमरा 20 मेगापिक्सल का है, इसका 100 मेगापिक्सल का है। सो मेगापिक्सल जितना ज्यादा होगा उतनी इमेज क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। सो जितना सेल छोटा होगा उतनी उसकी जो क्वालिटी है, इमेज की क्वालिटी है, वो उतनी अच्छी होगी। सो रास्टर डेटा जो होता है वो इमेज फॉर्मेट में होता है। फॉर एग्जांपल इसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। जो इमेजेस हमें मिलती है, सैटेलाइट हमें जो इमेज सेंड करता है, सैटेलाइट्स या एरियल फोटोग्राफ्स की मदद से हम ऊपर से कंटिन्यूअसली फोटोग्राफ्स अर्थ का लिया जाता है, और वो इमेज जो है वो जो स्टेशन होता है रिमोट सेंसिंग का, वहां पे वो भेजा जाता है। और वो एरियल फोटोग्राफ्स और सैटेलाइट इमेज जो है उसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड होती है? जो उसके सेल जितने ज्यादा है और जितना कम एरिया कवर करता है, उतना रेजोल्यूशन जो है, उतना क्वालिटी जो है, वो उस इमेज की, उस फोटोग्राफ्स की, उस मैप की वो उतनी बेहतर होती है। फॉर एग्जाम्पल, वन सेल और वन ग्रिड शोज 1 मीटर by 1 मीटर area of the earth surface, and another one map is there which show 100 meter by 100 meter area in वन सेल। सो एक 1 मीटर by 1 मीटर सेल जो है उसका रेजोल्यूशन जो है वो ज्यादा होता है। सो उसकी इमेज क्वालिटी जो है वो ज्यादा बेहतर होती है। सो रास्टर डेटा इज डिपेंड ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ मैप। सो जितनी हम अच्छी इमेजेस हमें मिलेगी, उतना हम अप्रोप्रिएट रिजल्ट, उतना हम प्लानिंग के हिसाब से, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हिसाब से जो हम मैप बनाएंगे, जो आउटपुट हम निकालेंगे, वो सब आउटपुट उतना क्वालिटी का, उतना अच्छा हो सकता है। बस उसके लिए हमें जो मैप है, जो इमेजेस है, जो एरियल फोटोग्राफ्स है, जो डेटा है, रास्टर डेटा है, उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना हमारा जो आउटपुट होगा वो उतना अच्छा हो सकता है। सो raster and vector. So what is raster and what is vector? We discussed in previous 2, 3, 4 slides. So vector to raster and raster to vector, raster data are described by a cell grid, one value per cell. For example, in left side here, point, line, polygon, these are the three geometric features, or that we say vector data. So this is vector data: point, line, and polygon. So when we convert it in raster, it covers one particular cell. So when line is there, for example, river is there, road network is there, or any other features are there. For example, electric poles line is there, mobile landline line is there, pipeline is there. So which वो जो लाइन है वो ज्यादा सेल में होती है। सो रास्टर इमेज जो होगी वो पूरे सेल को रिप्रेजेंट करेगी। आफ्टर दैट पॉलीगॉन, पॉलीगॉन फॉर एग्जांपल वन एरिया इज देयर, घर है या फिर एक कोई गांव है, तो वो गांव जिस सेल में उसका कुछ भी भाग आएगा वो सब रास्टर का पार्ट होगा। सो दिस आर दी डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड रास्टर। हम वेक्टर का रास्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, रास्टर का वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस इज देयर दैट हम वेक्टर डेटा को एट्रीब्यूट डेटा अटैच कर सकते हैं, और उस जितना हम एट्रीब्यूट डेटा उसको ऐड करेंगे, उतने तरीके से नए नए मैप, नए नए हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, वो सब हम उसके हिसाब से बना सकते हैं। रास्टर डेटा को हम डेटा अटैच नहीं कर सकते। सो ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों में है। आफ्टर दैट, फीचर्स और वेक्टर डेटा फाइल्स फॉर्मेट जो हमने अभी डिस्कस किए। नंबर 1 इज शेप फाइल्स
coverages, database, tables of XY coordinates, text files of XY coordinates, and CAD drawings are the part of vector data. Vector data are defined spatially. Number one is point. Point is a pair of X and Y coordinates which showed here X1 and Y1. इसका एक ही सिर्फ नोड होता है. So there is only one node. After that, line is a sequence of points. So 1, 2, 3, 4 point. First point is there, node is there, some vertices are there, and end point is there. So this represent line features, which is sequence of points. After that, polygon. Polygon is a closed set of lines. So it is closed set of lines, or it is enclosed system which started from some point, and after that it end also in that starting point. So that is enclosed area is known as polygon. So the concept of vector and raster. This slide shows this is the real world, or this is created map with the help of GIS technology. So ये जो मैप है, इसमें ये रास्टर इमेज है और ये वेक्टर इमेज है, जिसमें ये पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगॉन दिखाई गई है, which showed in vector map. Same all information shown in raster map also. So for example, there are H means houses. So houses shown in a 2 or 1 2 grid, means horizontal 2 and vertical 1 grid, and H is shown in 7, 6 and 7 grid, right, which is shown in vector model. तो रास्टर इमेज में जो हमें दिखाएगा वो पूरा सेल दिखाएगा. जो लाइन होगी वो पूरी ये कवर हो जाएगा, पूरा आर का जो सेल है, जो पूरे सेल है, वो सब दिखाएंगे. जो वेक्टर डेटा में है उसमें सिर्फ ये लाइन जो है वो दिखेगी. सो आफ्टर दैट देयर इज अ पॉलीगॉन टी और टी दिस. सो when we digitize it in GIS platform, we convert it into raster vector data, which show this way in vector representation. So ये यही डेटा इधर है, सिर्फ इसमें सेल दिखाए, सेल होते हैं, और इधर जो है पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन के हिसाब से हम वो शो करते हैं. प्रोसेस ऑफ GIS. There are projection, scale, accuracy, and resolution are the key properties of spatial data, which are very important to understand that this concept. Number one is projection. Projection is the method by which the curved 3D surface of the Earth is represented by XY coordinates on a 2D map, 2D flat map screen. Projection is the systematic drawing of parallels of latitude and meridians of longitude. So it is helpful to convert 3D map 3D into 2D, or it is useful to create map with the help of globe. We all know that our earth is in spherical shape. हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसका जो शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल है. जो हम स्फेरिकल में से हमें जो मैप बनाना पड़ता है वो हमें प्लेन पेपर पे बनाना है. हमें प्लेन पेपर पे जब हम बनाते हैं तो जो अर्थ जो है वो स्फेरिकल होने की वजह से हम मैप ठीक से बना नहीं, बाय विच parallels of latitude and meridians of longitude is
shown in plain paper, and after that draw with the help of पेन और पेंसिल. सो दैट प्रोसीजर इज नोन एज प्रोजेक्शन. हमें उसे प्रोजेक्शन कहते हैं. जो पूरी ग्लोब होती है, ग्लोब जो होती है वो कांच की होती है, उस पे लॅटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकाले होते. म्हणजे अक्षरवृत्त आणि रेखावृत्त त्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो. अक्षरवृत्त आणि रेखावृत्ताची जाळी त्यालाच ग्रॅटिक्यूल ऑफ लॅटिट्यूड अँड लॉन्गिट्यूड असं म्हटलं जातं. अक्षरवृत्त म्हणजे ज्या आडव्या रेषा आहे विषुववृत्ताला अनुसरून, त्या आडव्या रेषा आणि उभ्या रेषा ज्याला आपण रेखावृत्त म्हणतो, जिसको हम रेखावृत्त कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं. इसकी जो ग्रॅटिक्यूल है, इसकी जो जाली है, ग्रॅटिक्यूल ऑफ लॉटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ही जी जाली आहे, ये जो जाली है वो ग्लोब से हमें कहाँ पे निकालने की है, वो निकालने की है प्लेन पेपर पे. सो दिस प्रोसीजर इज नोन एज प्रोजेक्शन. हम इसको प्रोजेक्शन कहते हैं. सो अलग अलग प्रोजेक्शन उसके लिए यूज किया जाता है. प्लेन प्रोजेक्शन होता है, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होता है. तो डिफरेंट प्रोजेक्शंस आर देयर, जिसकी मदद से हम ये मैप तैयार करते हैं. सो हमें वो प्रोजेक्शन जब हम मैप पे काम करते हैं इस GIS प्लेटफॉर्म पे, दैट टाइम हमें जो इमेज हम उस पे अपलोड करते हैं, जिस पे हमें काम करना है, जिस पे हमें प्रोजेक्ट करना है, जिस पे हमें कुछ रिजल्ट निकालने के, कुछ एनालिसिस हमको करने का है, वो वैसे ही हम यूज नहीं कर सकते. बिकॉज जब तक हमें उसे प्रोजेक्शन नहीं दे देते, तब तक वो जस्ट इमेज होती है, वो सिर्फ इमेज होती है जिस पे हम कोई भी लोकेशन सेट नहीं कर सकते. सो प्रोजेक्शन इज रिक्वायर्ड while doing a special analysis in this platform. After that, scale is also very important. Scale is the ratio of the distance between any 2 points on the map and corresponding point on the actual ground. So इसे हम स्केल कहते हैं. मराठीमध्ये त्याला प्रमाण असं म्हटलं जातं. उसको हम प्रमाण कहते हैं. म्हणजे पृथ्वीवरील कोणत्याही 2 ठिकाणांमधील अंतर आणि त्याच 2 ठिकाणांमधील नकाशावरील अंतर यांचं गुणोत्तर, द रेशो बिटवीन दिस डिस्टन्स इज नोन एज स्केल. इन थियरी GIS इज scaled independent, but in practice there is an implicit range of scales for data output in any project. So scale is required while working in GIS. Accuracy is also very important. Accuracy means how well does the database info or information match the real world. हम जो GIS में काम करते हैं, हम जो पॉइंट लाइन पॉलीगॉन बनाते हैं, उसको डेटा अटैच करते हैं, और उसकी मदद से हम जो रिजल्ट निकालते हैं, जिसका एनालिसिस करते हैं, जो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर प्लानिंग पर्पज. जो हमारे प्लानर से, डेवलपर से, उन्हें देने के लिए हमें इसकी एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जांपल, एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी मीन्स, आप सब ने GPS नाम सुना होगा. GPS मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट technique for data, which is important to give data for GIS purpose. जो GIS के लिए जो डेटा लगता है, उसमें ये GPS भी आता है, जिसका डेटा हम यूज करते हैं. सो उसकी एक्यूरेसी होती है. एक्यूरेसी मीन्स व्हाट, कि जो GPS पॉइंट हमें दिखाता है, वो क्या दिखाता है, वो स्पेशल लोकेशन दिखाता है. वो इन GIS, वो जो होता है GIS का मोबाइल जैसा हैंडहेल्ड GIS बोलते हैं उसको. सो हैंडहेल्ड GIS shows the actual location on the earth surface, which is special location which shows latitude, longitude and height, right? So उसके ऊपर उसकी एक्यूरेसी होती है वो 5 मीटर, 10 मीटर, 3 मीटर. इसका मतलब क्या होता है कि वो जो पॉइंट है, वो अगर एक्यूरेसी 5 मीटर है, तो उसका मतलब जो GPS जहां पॉइंट हमने लिया है, वहां से
5 मीटर के रेडियस में वो एक्चुअल अर्थ पे वो पॉइंट है, उसके बाहर नहीं है, उसी में है। सो उसकी एक्यूरेसी कितनी है? लगभग 5 मीटर। जो अर्थ का एरिया हमने देखा तो उसमें 5 मीटर इज वेरी रेयर, सो एक्यूरेसी लेवल इज वेरी हाई। सो जो 3 मीटर, 2 मीटर, यहाँ तक जो एक्यूरेसी हम यूज करते हैं, तो उस हिसाब से वो डेटा मोर अप्रोप्रिएट और मोर एक्यूरेट होता है। So accuracy is positional. How close are the features to their real world location is very important. Consistency. Do feature characteristics in database match those in real world? So their consistency also have to match. Is consistency is a road in the database, a road is in the real world. After that, competency are all real world instances of feature present in the database. So after that, resolution जो हमने अभी we discussed in last slide, resolution shows the size of smallest features able to recognize for raster data. It is the pixel size. So whether pixel size is smaller, then the resolution is higher, and when the pixel size is higher, then the resolution of the image is lower. So हमें ये सब यूज करने में ये जो है प्रोजेक्शन, स्केल, accuracy and resolution are the key features in GIS process. The present slide shows the GIS data model implementation. हम GIS में एक्चुअल क्या करते हैं? So this is our real world, जिससे हम क्या करते हैं, जो हमें जिस चीज की स्टडी करनी है, जिस चीज का हमें प्रोजेक्ट करना है, जिस चीज का हमें प्लानिंग करना है, और which data we are required for our planning and management, we digitize all data in different layers. हम उसका क्या बनाते हैं? लेयर्स बनाते हैं. आपल्याला त्याचं काय करावं लागतं, तर एक एक लेयर आपल्याला त्याचे सेपरेट करावे लागतात. सो ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बाउंड्रीज आर देयर. हमें एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री की सेपरेट लेयर हम बनाते हैं. यूटिलिटीज, जिस जिस चीज की यूटिलिटीज है वो यूटिलिटीज हम डिफरेंट बनाते हैं. जोन जो है वो डिफरेंट बनाते हैं. बिल्डिंग्स डिफरेंस है. पार्सल, हाइड्रोग्राफी, स्ट्रीट, डिजिटल ऑर्थोग्राफी, जो जो हमारे पास लेयर हम बना सकते हैं वो सब लेयर हम इसमें बनाते हैं. सो डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड बाय लेयर्स, कवरेज और themes or concept, with each layer representing a common feature. For example, I have made one feature, that is hydrography. So what hydrography layer shows us? So all related to hydrology, rivers are, we can show there rivers, dams, ponds, lakes, all these things, waterfalls, all these things in hydrography layer. So ये layers क्या है? So layers coverage the themes और concept. It is theme oriented. जो कोई थीम है, हमें जिस किसी थीम पे काम करना है. फॉर एग्जाम्पल, वी वांट टू डेवलप tourism potential map or agricultural potentiality of a particular area. So that is the concept or that is theme. So agricultural potentiality, we want to find agricultural potentiality. So that in that manner we will create separate layer of agricultural data or agricultural field. So ये सब है. Layers are integrated using explicit location on the Earth surface. Thus, geographical location is the organizing principle. So इससे हम ये different layer बनाते हैं.
जो लेयर्स है वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे, अगले या उसके अगले। या कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ जीआईएस। सो जीआईएस में हम क्या करते हैं? सो जीआईएस इज अ लेयर केक ऑफ इंफॉर्मेशन। सो दिस आर दी लेयर्स, दिस इज रियल वर्ड, जिसमें हमने क्या किया? लैंड यूज सेपरेट किया, स्ट्रीट्स जो है, रोड्स जो कोई भी है वो सेपरेट की, डिस्ट्रिक्ट्स और जो बाउंड्रीज है वो सेपरेट की, पार्सल जो है वो सेपरेट किया। तो और उसके हिसाब से हमने जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है, जो जिसे हम टेबुलर डेटा कहते हैं, जिसे हम एट्रीब्यूट डेटा कहते हैं, सो दैट डेटा we attach to all these layers, and then we create new maps, new ideas of our thinking in that particular layer. So this is the concept of this GIS. So GIS is a theme or layer or coverages. So all these are themes. So land use is there. So land use means what? Land use and land cover. Land use means those features which are created by human being or by man. For example, road construction, settlements, buildings, dam, agricultural fields. All these are the land use. And what is land cover? Land cover is the natural phenomena such as mountains, forest area, like all these are natural water bodies. For example, rivers, oceans, or natural ponds or lakes. Natural lakes are the land cover. So we can take this land use theme and we create different maps of land use, which will be helpful for future planning. इससे हम different space or different we can create spatio-temporal, we can download or we can store spatio-temporal images or spatio-temporal data from different sources, and we create different layers on that data, and then we generate new idea or new maps, actually new idea in the form of map. So basically GIS का जो बेस है, बेस इज द मैप. सो आफ्टर ऑल हम क्या बनाएंगे? जो कुछ काम जीआईएस में करेंगे, जो कुछ पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन बनाएंगे, जो एट्रीब्यूट डेटा अटैच करेंगे, उसका जो आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा, वो बेसिकली that is map, that is in the form of map. So map is the basic concept in GIS. So for creating those map, planning map, different maps, we have to separate all layers, and after that, as per our requirement, we can also connect all these layers again. इसमें से हम जो लेयर हमें चाहिए उसका हम सेपरेट मैप बना सकते हैं, यानी जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है उसके हिसाब से हम वो लेयर बना सकते हैं. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ एग्जांपल ऑफ लेयर्स. सो दिस इज पार्सल लेयर्स, zoning, topography. In topography we shows contour lines there. So contour lines are there, wetlands, demographics, land cover, imagery, base maps. So here land use, elevation data is there, parcels is there, streets are there, customers are there. Different types of layers we can create with the help of point, line and polygon. किसी भी चीज का हम डेटा जनरेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम लेयर बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, नेवासा, in नेवासा तहसील, we can show tube wells in नेवासा तहसील, or wells, or hospitals, different types of hospitals. So hospital is a theme.
So how many hospitals are there in Nevasa Tehsil? So we can separate that layer, and if we want to do something about that, if we want to plan something about, we want to develop some ideas about that, we can create that idea with the help of that particular layer. If we want to take another layer with this layer, we can also merge one layer to another layer, and we can create new idea with the help of the. इसका मतलब याचा अर्थ काय की वेगवेगळे लेयर आपण तयार करतो वेगवेगळ्या आयडियाच्या माध्यमातून, आणि त्या प्रत्येक आयडियाच्या म्हणजे प्रत्येक लेयरच्या माध्यमातून आपण आपलं सेपरेट काहीतरी रिझल्ट आपण हे करू शकतो. आता हे लेयर जब अपन तैयार करतो, ये लेयर जब हम बनाते हैं, ये सब लेयर हम जो बनाएंगे, तो हर लेयर का जो एट्रीब्यूट डेटा कनेक्शन जो होता है उसको हम एट्रीब्यूट डेटा कनेक्ट करते हैं. बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट टेबल उसका रेडी हो जाता है. हमने पॉइंट बनाया तो पॉइंट की इंफॉर्मेशन जो है वो GIS सॉफ्टवेयर में स्टोर हो जाती है. बट इफ वी हैव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पॉइंट और अबाउट दैट फीचर्स, we can add all these information to that particular point. For example, hospital is there, so hospital is the point. तो मेरे पास हर हॉस्पिटल का डेटा है. फॉर एग्जांपल, हर दिन हर हॉस्पिटल में कितने लोग आते हैं, जो डिफरेंट टाइप के हॉस्पिटल से, डेंटल इज देयर, जनरल हॉस्पिटल्स आर देयर, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल्स आर देयर. सो व्हाट आर देयर, उनकी हर रोज की ट्रीटमेंट कौन सी है, कौन से मरीज ज्यादातर आते हैं. जैसे जनरल हॉस्पिटल से मैंने लेयर बनाया नेवासा तहसील के पूरे जनरल हॉस्पिटल, कितने जनरल हॉस्पिटल है. फॉर एग्जांपल, नेवासा तहसील, in Nevasa Tehsil there are 120 hospitals are there, which are general practitioners, which means general practitioner के 120 हॉस्पिटल्स. सो हर गांव में कौन सा हॉस्पिटल में किस प्रकार के मरीज ज्यादातर आते हैं, ये मैं उस मैप में अटैच, उस डेटाबेस में मैं अटैच कर सकता हूं एज ए एट्रीब्यूट टेबल. सो किस प्रकार का मरीज कौन से एरिया से आते हैं ज्यादातर. So why these particular epidemics found in that area, so हम वो ढूंढ सकते हैं और उसके हिसाब से वहां पे ट्रीटमेंट हो सकती है, और उसके हिसाब से वहां पे प्लानर जो है वो कुछ काहीतरी योग्य पावलं त्या माध्यमातून उचलू शकतात, आणि त्या माध्यमातून तो प्रॉब्लेम जो आहे तो सॉर्ट आउट हे करू शकतात, आणि त्याचा फायदा मग प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट साठी होतो. आय हॅव वन एक्झाम्पल अबाउट दॅट. मेरा एक फ्रेंड है, मेरा जूनियर है एक्चुअली, साईनाथ आहिर नाम है उसका. सो आई वांट टू जस्ट शेयर द स्टोरी ऑफ हिज स्टोरी. सो जब मैं एसपी कॉलेज में सीख रहा था तो वो मेरा 1 साल जूनियर था. सो ही वॉज वेरी क्लेवर पर्सन, एंड he was very familiar to GIS. He likes GIS, and he every time he tried to work in GIS platform. वो GIS पे काम करता था ज्यादातर. जब हम पास आउट हो गए तो वो भी बाद में नेट सेट क्वालिफाइड हुआ, लेकिन उसने पीएचडी पूरी की. सो पीएचडी में उसने रिवर पे काम किया, प्रवरा रिवर पे. और आफ्टर दैट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज पीएचडी, ही प्रिपेयर्ड वन रिसर्च पेपर. नाशिकच्या परिसरामध्ये दमनगंगा नावाची नदी आहे, आपली गोदावरी नदी आहे, वेगवेगळ्या नद्या आहेत. त्यांनी एक प्लान तयार केला GIS च्या मदतीने. उसने ये GIS की टूल यूज करके, डिफरेंट लेयर का यूज करके मैप बनाए, जिसमें उसने जो वेस्टर्न साइड का जो हमारा पार्ट है महाराष्ट्र का, और ईस्टर्न साइड का जो पार्ट है, when we compared both side, western side and eastern side of Sahyadri mountain or Western Ghat, we found that
इन वेस्टर्न साइड देयर इज हेवी रेन, वहां पे बारिश जो होती है, बरसात जो होती है वो ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादा है, लेकिन उनका पानी जो है वो बहुत कम एरिया में ट्रेवल होता है. मोस्ट ऑफ द रिवर इन दैट रीजन आर 30 kilometer, 40 kilometer, 60 kilometer, and after that the water is submerged in ocean or Arabian Sea. उसका पानी जो है 50-60 किलोमीटर बाद इमीडिएटली समंदर में चला जाता है. सेम टाइम देर आर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, Pravara, Mula, all these rivers are flowing from west to east, and there on eastern side there is less rainfall. So पानी जो है वो नदियों में कम होता है और बहुत ज्यादा एरिया ये रिवर एक्वायर करती है. फॉर एग्जांपल गोदावरी फ्लो जनरली 1465 kilometers and it covers larger area, but the water is very less in that river. So उसने GIS की इससे उधर की जो वेस्टर्न रिवर है इधर जोड़ कैसे जोड़ सकते हैं उसका मॉडल तैयार किया. और जब लास्ट टाइम बिफोर 6 or 7 months from today he presented his idea before our Chief Minister, Mr. Eknath Shinde. So his idea was appreciated by Chief Minister. So we can create this idea, and after that maybe अगर उसकी आइडिया अच्छी होगी, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो सकता है, तो डेफिनेटली ही विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर प्लानिंग अबाउट रिवर कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र. सो इस तरीके से हम जो लेयर बनाते हैं वो लेयर का हम लेयर की मदद से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में हमारा रोल दे सकते हैं. हर फील्ड जो है, एवरी फील्ड, ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ नॉलेज वी कैन क्रिएट और वी कैन गिव आवर हमारा जो सहभाग आहे, जो आपलं जे सहभाग आहे तो GISच्या माध्यमातून आपण देऊ शकतो प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंटच्या दृष्टिकोनातून. भविष्यात in near future, in next after next generation, GIS will be the most powerful and mostly useful और यूजर फ्रेंडली. हम मोबाइल में भी इसका यूज कर सकते हैं और ये हर फैकल्टी में, हर सब्जेक्ट में इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी होने वाला है, क्योंकि ये इतना जबरदस्त टूल है कि इससे हम हर तरीके का काम, हर तरीके का प्लानिंग डेवलपमेंट हम इसमें दे सकते हैं. So how it is work? So we can input data from, we can capture data, digitize data, we can take from different sources. This is the idea of इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डेटा. हम क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्स से डेटा कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं, उस पे टूल्स, मॉडल, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करके हम उसका मैनिपुलेशन करते हैं. मैनिपुलेशन मींस नॉट चेंजिंग दैट फीचर्स, उसका तोड़ना मरोड़ना, इससे मैनिपुलेशन नहीं कहते. मैनिपुलेशन मींस चेंज फीचर्स फ्रॉम वन स्पेसिफिक एका याच्यात, म्हणजे एका फॉर्मॅट मधून दुसऱ्या फॉर्मॅट मध्ये कन्व्हर्जन करणं आणि ऍज पर आवर रिक्वायरमेंट त्याच्यामध्ये बदल करणं, याला आपण मॅनिप्युलेशन म्हणतो. सो आफ्टर मॅनिप्युलेशन वी कॅन मीन्स वी कॅन टेक डेटा फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस, रिमोट सेन्सिंग, GPS or map,
cadastral maps. We can take data from topo sheet or topographical sheet. After that, we digitize that data. Digitization means conversion of raster to vector in format of point, line, and polygon. So that is called digitization. After that, storage, manage that data and display in the map format or map display visualization multiमीडिया रिप्रेजेंटेशन. सो हम उसका मैप फॉर्मेट में बनाते हैं. सो इसे हम GIS कहते हैं. सो दिस इज द इनपुट मेथड. सो what are the input data for GIS? So maps are the basic requirements. Aerial photographs are also important data. After that, satellite imageries are there, other sources are there, field observation are there. Field observation में हम क्या करते हैं? For example, GPS data, we have GPS data. So we can provide this data to our GIS system and we use to digitize that in our GIS system. So digital input data we can provide. सर्वसाधारणपणे आपण काय करतो? डिजिटल डेटा देतो म्हणजे मॅप देतो म्हणजे काय देतो? तो सॉफ्टवेयर फॉर्मेट मध्ये अपन या सिस्टम इस सिस्टम को हम प्रोवाइड करते हैं. वी कैन स्कैन टोपोग्राफिकल शीट, वी कैन स्कैन सैटेलाइट इमेजरी, वी कैन स्कैन एरियल फोटोग्राफ and we provide that to GIS platform and after that we work on that data. So these are the inputs: satellite image, aerial photograph, map, field observation. Field observation में हम different data, for example photographs are there. हमने photograph निकाली मोबाइल में, so that is also part of field observation. हमने GPS point लिए अलग अलग जगह के. For example हमारे कॉलेज में, सोनई कॉलेज में, how many trees are there? We can locate each and every tree. We can add attribute data to each tree. We can so before that we have to give input to this platform. So what are the output? So output are the following types. So types of output products from GIS platforms are thematic map, choropleth map, proximal or disymmetric maps, contour maps, dot maps, line maps, landform maps, animated maps, bar chart, pie chart, scatter plot, histogram. GIS or output of the GIS. हम thematic map बना सकते हैं. We can create different themes. choropleth map शेडिंग मेथड यूज करके हम choropleth मैप बना सकते हैं. सो ऑल दीज मैप्स आर द आउटपुट डिस्टिंक्टिव. GIS technology integrates common database operation such as query and statistical analysis with unique visualization and geographic analysis offered by map. हम GIS की टेक्नोलॉजी की मदद से we can work on common geo database and operation such as query or statistical analysis. हम different queries जो मैप की है वो हम निकाल सकते हैं. उससे हम यूनिक मैप जोग्राफिकल एनालिसिस करके वो हम बना सकते हैं. GIS readily converts data between different data models unlike most database and statistical software. So these abilities distinguish GIS from other information system and make it valuable to wide range of public and private enterprises for explaining events, predicting outcomes and planning strategies. So with the help of GIS platform, with the help of geographic information system, we can make different public and private enterprises explaining events, predicting some outcomes, and we give planning strategy to planners and developers. The power of GIS, the interaction between the database and the map, along with the ability to create graphs, tables, and reports. In this slide, we show two different screens. First is spatial
features is there, that is USA, and second is attribute data. We can support or we can attach number of attributes or number of tables or number of information एखाद्या शकतो. फॉर एक्झाम्पल कॉलेजमध्ये वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहेत, त्या प्रत्येक डिपार्टमेंटची मुलं कुठं कुठं गेलेली आहेत त्याचा आपण फ्लो चार्ट आपण करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल आपलं महाविद्यालय सुरू झालं साधारण 80-89च्या दशकामध्ये. तेव्हापासून भूगोल विभाग, इतिहास विभाग, मराठी विभाग किंवा सायन्स डिपार्टमेंट जे इतर आहेत, ती प्रत्येक मुलं नेमकी कुठे गेली, त्यांचा फ्लो कसा आहे. सो वी कॅन क्रिएट फ्लो चार्ट्स, वी कॅन क्रिएट डॉट मॅप्स, ते कुठं स्थायिक झालेले आहेत. त्यानंतर त्यांचे आतापर्यंत रिझल्ट असतील किंवा वेगवेगळ्या जी माहिती आपल्याकडे असेल, जी इन्फॉर्मेशन आपण असेल, ऑल वी कॅन अटॅच टू दॅट feature or that shape file, and after that we create different maps from different information in a single click. आपण एका क्लिक वरती मग त्याच्यापासून अनेक प्रकारचे नकाशे आपण तयार करू शकतो. आणि हे सगळ्या फील्ड मध्ये ऍप्लिकेबल, वेदर यू आर स्टडी मीन्स यू आर बॉटनी स्टुडंट और एन्व्हायरमेंटल सायन्स स्टुडंट्स, या प्रत्येक फील्डमध्ये आज ना उद्या भविष्यामध्ये या GIS चा मोठ्या प्रमाणात वापर होणार आहे. आणि तो आजही मोठ्या प्रमाणात एन्व्हायरमेंटल प्लॅनिंगच्या बाबतीमध्ये होताना आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यानंतर बॉटनीच्या संदर्भात वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये याचा मोठ्या प्रमाणात इसका जो यूज है, इसका उपयोग जो है वो होता है. और इसकी एबिलिटी ये है कि हम इसकी हेल्प से मैप पे हम ग्राफ दिखा सकते हैं, टेबल दिखा सकते हैं, इसका हम रिपोर्ट भी प्रिंटेड फॉर्म में निकाल सकते हैं. आफ्टर दैट, हाउ डज GIS आंसर स्पेशल क्वेश्चन? इसका डिस्कशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट. GIS allows to abstract information from physical world and display it in layer or themes. So ये हमने डिस्कस किया है कि we can give result from physical world in the form of different layers. We can create different layers for our different purposes. As per our requirement, we can create different themes or different layers. So input data and edit both spatial and attribute data, display data on a screen or print a map. We can display data on a screen or we can show maps. We will see some maps which were created by different scholars, which मैंने कुछ मैप डाउनलोड किए जो आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि किस तरह के मैप हम इसमें बना सकते हैं. आफ्टर दैट, एनालाइज द डेटा फॉर मेकिंग डिसीजंस एंड सर्चिंग फॉर पैटर्न्स. सो हम पैटर्न चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वी क्रिएट land use land cover map for particular area and for particular period of time. For example, I have created land use land cover map when I was doing PhD in my area, and I completed my PhD on Sindhudurga district. I have studied Sindhudurga district. So I have create land use land cover map from 1997 to 2017. So I have stored, or I have taken 10 years gaps satellite images, and then I have created, I have found different distance or what will be in future. So what will be the त्याचा पॅटर्न कसा आहे आणि भविष्यामध्ये त्याची चेंजेस कसे होतील, त्याचा ट्रेंड कसा आहे. सो ट्रेंड आपल्याला त्या माध्यमातून काढता येतो, जो की प्लॅनरच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाचा आहे. सो क्रिएट मॉडेल्स अँड आस्क व्हॉट इफ. सो वी कॅन क्रिएट डिफरंट मॉडेल्स विथ द हेल्प ऑफ GIS. 5 type of questions can particular features are found. What geographical pattern exists?
जो हमने एखादा एरियाचा आपण अभ्यास करतोय, सो त्या ठिकाणी एखादा विशिष्ट पॅटर्न आपल्याला पाहायला मिळतो का? सो ते आपण त्या माध्यमातून शोधू शकतो. व्हेअर हॅव चेंजेस ऑकर्ड ओव्हर अ स्पेसिफिक टाइम. सो विशिष्ट वेळेमध्ये कुठं कुठं बदल झाले. फॉर एक्झाम्पल लँड यूज लँड कव्हर मध्ये आय हॅव फाउंड दॅट built up area is increased in along the roadside, right? At same time, forest area also forest area decrease along that roadside, and also in the mountainous area also. म्हणजे mountainous area मध्ये सुद्धा फॉरेस्ट एरिया कमी झाला आणि रोडच्या परिसरामध्ये सुद्धा फॉरेस्ट एरिया कमी झाला आणि त्याच वेळी बिल्टअप एरिया म्हणजे बिल्डिंग घरं वगैरे मोठ्या प्रमाणात वाढले. ते विशिष्ट वेळेमध्ये विशिष्ट काळामध्ये वाढले. सो व्हाय दिस हॅपन? सो वी कॅन show or we can explain or we can find all these things. Where do certain condition apply? कुठं कोणत्या प्रकारच्या कंडिशन आपण अप्लाय करू शकतो? वी कॅन गिव्ह आयडिया अबाउट दॅट. What will be the implication if an organization takes a certain action? So all these things are the part of all these questions can be answered by GIS. So geographic information system are helping to solve global issues or local problems, local issues. For example, there are two maps shown here. First is this is global map and this is street map. एखाद्या शहरामध्ये जी रोड आहे त्या रोडला लागून असणारी जी घरं आहेत त्यांची हे कशी आहे, म्हणजे मांडणी कशी आहे, कोणती घरं रस्त्यामध्ये आहेत का, किंवा आपण त्याला काय म्हणतो ती आहेत का, तर हे आपण कशाच्या माध्यमातून सोडू शकतो? तर लोकल प्रॉब्लेम्स. फर्स्ट, द मेजर challenges we face in the world today are overpopulation, pollution, deforestation, natural disaster have critical geographic dimension. We can give plan for solving these problems, means how to deal with overpopulation, how to deal with population, how to deal with deforestation with the help of GIS. So we can give plan for global problems. We can also helping with local problems, whether investigation getting an industrial facility or figuring out the best route for an emergency vehicle. Local problems also have a geographic. We all are well known about our mobile, and in that mobile we have GPS and Google Map are there. So Google Map is also product of geographic information system. क्या करते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू रीच सम प्लेस, वी वॉन्ट टू गो फॉर एग्जाम. सो we can put our mobile in Google Map mode. So map tell us how to reach that place. He suggest best route to reach that place. हमें वो क्या करता है? बेस्ट रूट एक्सप्लेन करता है. सो कहाँ पे नो पार्किंग है, कहाँ पे रोड पे ट्रैफिक ज्यादा होती है, कौन सा रोड छोटा है, कौन सा बड़ा, ये सब वो दिखाता है. सो दैट इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ GIS, एंड वो हमें लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है. वी कैन गिव सॉल्यूशन बाय मैपिंग. हम मैप की मदद से उसको हम ये कर सकते हैं. कोर बेनिफिट्स ऑफ GIS, so that is explained already. So what types of data are used in GIS? So coordinate data are used, connection informations are there, descriptive information are there, temporal information are there. Temporal means टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर देयर. सो जैसे मैंने बताया कि मैंने डिफरेंट टाइम के टोपोशीट लिए, डिफरेंट टाइम के सैटेलाइट इमेज लिए. 50 साल पहले
यहाँ पे लैंड यूज कैसे था, लैंड कवर कैसा था, 20 साल पहले कैसा था, आज कैसा है, और अगले 20 साल में what changes will be happen in that this area. We can show these temporal changes in map, so we can give trend, or we can find trends with the help of temporal information. Images, documents, and URL are the types of data are used in GIS. So coordinates data for GIS, this is also we explained in previous slide. We can give coordinates, means latitude and longitude, to study this, to work in GIS platform. So these are the example of 3D map created by GIS platform. With the help of GIS platform, there are buildings which shown in this map. So 3D maps is there. So this is digital elevation model which is created by this platform. हे काही सॉफ्टवेअर्स आहेत की ज्यांचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात GIS मध्ये होतो. So these are the softwares. Number of softwares are there. Basically, we can categorize these softwares in commercial softwares and open source softwares. So commercial softwares are paid softwares. So if we want to use these softwares, we must to paid for that software, and then after we can use those software. So there are ArcGIS, which was developed by ESRI, Environmental Sustainability Research Information. So this is the company which provide this ArcGIS system. So environment शी संबंधित ती आहे, and this is the very powerful tool, and this is one means currently this is number one company. So ESRI is the first company who create or who invest in GIS platform after, means in 1963, when Roger Tomlinson created or invented this GIS system. Then ESRI is the first company who create or who deal or who started first GIS software, that is ArcGIS. ArcGIS is the very important, very powerful tool or software which is used overall the world. ये सबसे ज्यादा दुनिया में जो कोई सॉफ्टवेयर यूज होता है तो वो ArcGIS है. नंबर ऑफ टूल्स आर देयर. जो टूल्स हमें प्रोवाइड किए वो बहुत अच्छे हैं, जिसकी मदद से हम डिफरेंट मैप्स तैयार कर सकते हैं, जो यूजर फ्रेंडली मैप्स है. आफ्टर दैट जियोमीडिया, which was produced by Hexagon Geospatial Company, which was previously known as I think त्याला पर्टिक्युलर नाव होतं. तर जिओमीडिया हे आहे, त्याला पूर्वी वेगळं नाव होतं. सो दिस इज सेकंड नंबर कंपनी. Very important company is there. Basically, ArcGIS is deal with vector data more accurately or more अच्छी तरीके से जो काम करता है वो ArcGIS जो वेक्टर डेटा में ज्यादा करता है, और जो मीडिया जो है वो रास्टर डेटा को ज्यादा डील करता है. जो रास्टर डेटा जो हम कर सकते हैं रास्टर डेटा पे काम, जैसे मैंने बोला लैंड यूज लैंड कवर मैपिंग. सो लैंड यूज लैंड कवर मैपिंग हम जो मीडिया में ज्यादा ArcGIS से बेहतर तरीके से हम निकाल सकते हैं, जिसमें एक्यूरेसी लेवल जो है वो बहुत हाई होती है. So ArcGIS deal with vector data, GeoMedia is deal with raster data. After that, global mapper is also very important software, which is come from Blue Marble company. It is also very important software which provide number of facilities in that particular software. We can create maps in very simple manner. It is also very easy to understand.
ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है. आफ्टर दैट मैप इन्फो, small words are the commercial software. We can use all this software by paid, and after that we can use this software. After that, open source softwares are there, or this is known as free software. We can download this software from internet sources, Google or other explorer. So QGIS is one of the very important software in all these softwares. QGIS is the first software which is open source software. इन्होंने सबसे पहले उसको पहले क्वांटम जीआईएस कहते थे. सो क्वांटम जीआईएस इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. सो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें आरजीआईएस और ग्लोबल मैपर, जो इन्फो, जियो मीडिया, जिसमें जो फैसिलिटी है, जो टूल्स है, all tools are there in QGIS. One more thing is there, जो QGIS है, there is a plugin नाम का एक ऑप्शन is there in QGIS. जो प्लगइन में क्या है कि whether I am geological, if I am a geologist, then I have to choose only that particular tool in my software, and I can work in geological and political science, environmental science, civil engineering, business, education, real estate, healthcare, etc. So these are the some maps created with the help of GIS. This is potentiality map. This is elevation map. Drainage system is there. Observation wells are there. Villages are there. This is groundwater potentiality map, where means groundwater potential is there. So this area shows, red color shows very low groundwater potentiality, whereas green area shows very high potentiality map. So ये जो मैप बनाया है, इसका ये डिफरेंट डेटा सोर्स यूज किया है, जिसमें टिन डेटा, इसमें 3D डेटा, जिसको हम 3 डायमेंशनल डेटा इसमें यूज किया गया है, और उसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा ग्राउंड वाटर पोटेंशियलिटी इसकी निकाली है. सो इस तरह के मैप हम बना सकते हैं. सो दिस इज लैंड कवर मैप. सो लैंड यूज इन 1999, 2000, 2005, 2011 and 2013. It shows what are the changes made, what are the changes temporally happened in this map. So when we see, this is the forest area or high dense forest area. So green patch are there. So when we see in all maps, it is decreases in every 5 years, and last we can see there is a low dense area is larger here, which was फॉरेस्ट कवर इसमें ज्यादा था. इधर फॉरेस्ट कवर जो है वो बहुत ही कम हो गया. सो वी कैन शो temporal changes, spatio-temporal changes. So it is spatio-temporal changes we can show on the map. So this is also one of the map. So thank you.